Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining this session today with Omer Ghani. He will talk to us about a lot of things, and he'll talk about the use case for dairy and bee farming, exactly as to how it can be used to enhance agriculture and the use of technology in agriculture. और इसके हवाले से मतलब माशाल्लाह उमर साहब का बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड है, जीसी के साथ फिलहाल एसोसिएटेड भी हैं और फर्दर और मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व भी हैं, वो भी बताते चलेंगे उनके उनके हवाले से भी। तो उमर साहब मेरा ख्याल है लोगों का शायद टाइम चेंज की वजह से थोड़ा सा शायद कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन क्योंकि द सेशन इज रिकॉर्डेड रिगार्डलेस, सो आई थिंक वी कैन गेट स्टार्टेड। सो आई गिव द platform over to you, and just in the interest of time, what I will request attendees is that if you can hold your questions till the end, and once Umar Saab is done, then we can ask all those questions. So Umar, you have have another 30 minutes to present, and then when you're done we can have the question and answers. And I know you have a hard stop because you have another event to attend, so we will take it like that. So over to you. Thank you, Saad, for giving me this opportunity. Agriculture is something that's been my key focus for the last 10 years since I came back to Pakistan. And this entire journey started with my first project that I took when I returned to Pakistan, in which I was asked by Central Bank of Pakistan, State Bank of Pakistan, to go map all the agriculture value chains across all districts across Pakistan. So the most comprehensive study till date done by the State Bank of Pakistan that was concluded in 2016. I'm the author of that study, and as part of that study, which was not only just on the demand side but also on the supply side, I went and collected a lot of primary data. And based on that data, I started developing some business models for various clients, and I'll showcase a few examples of some business models today. I also worked with 3 of the leading banks during that project that included Habib Bank, Bank Alfla, and Faisal Bank, and developed their products in which essentially they got approval to go out and lend to farmers who did not have collaterals, in which we were able to create structures where banks were allowed to, under the guidelines and prudential regulations of State Bank, they were allowed to go lend to those farmers who did not have collateral. And this is what we call cash flow based lending, which was essentially not happening in Pakistan. And wherever lending was happening, it required the borrower to post a collateral, and without collateral, they were not able to borrow from banks. So anyway, based on the work that I did with Habib Bank, and Habib Bank's team that built up their agriculture portfolio the last 10 years substantially, and they're now market leaders in agriculture value chain financing. So some of the models that I will showcase essentially draw inspiration from the work that's been done on ground successfully. And now we're looking to scale some of these models so that the impact for the agriculture sector can be exponentially increased. Now, so the Village Growth Acceleration Program, essentially what I call Village Growth Acceleration Program, is a combination of some interventions that we believe are necessary for accelerating the agriculture sector. And when I refer to agriculture sector, then there are lots of related sectors. There is a strong nexus, for example, between water, energy, and agriculture that needs to be looked at, in that context. But the interventions that I talk about that must be pursued if you want to accelerate the agriculture sector. When you talk about the farmer, one cannot just take capital to the farmer. One needs to take a combination of capital and capacity. Without building the capacity of the farmers, giving capital is not going to yield the desired results. Alongside, we believe that providing access to markets to those farmers is also as important as anything else. And when you look at the bottom of the pyramids, we realize that access to water and access to energy remains also major challenges for the agriculture sector. How do we bring all of these interventions together under a program? That was the inspiration for me to design the Village Growth Acceleration Program. And about 2 years back, I was then hired by a European Union, a primary contractor to European Union called International Trade Center, which was implementing a project called GRASP in Pakistan to design a fund. So the principles of that fund essentially, I'm showcasing that on my screen right now. The primary principles that we built the fund on are behind you. And this project is now rolling out in Balochistan and Sindh. Under GRASP, they've got about almost 50 million euros to spend for agriculture value chains across key value chains within Sindh and Balochistan.
So overall, the goals when I started developing the Village Growth Acceleration Program were to develop an integrated rural ecosystem and also connect all the key stakeholders, including diaspora, for opportunities within that ecosystem. And that ecosystem it required for us to identify and enable key functional actors who can provide a range of services to a diverse clientele. I was able to identify, connect, support, and fund startups and other opportunities within the agriculture sector, which also consisted of collaborative actors and utilize each other and offer coordinated support, which is substantially funded by itself, corporate sponsors, and perhaps some support from government. But reliance purely on government, we wanted to move away from that model and we wanted to build some sustainable models. So that basically essentially led me to do a few interesting. Right. So the problems that we were trying to solve in the Village Growth Acceleration Program, what we realized was that predominantly majority of the farming community in Pakistan was involved in conventional farming without use of technology, inefficient use of resources. For example, a lot of wastewater was used directly in farming, and which contaminates your crops, and ultimately the consumers get contaminated toxic food. Surface erosion, greenhouse emissions, low productivity. When you look at Pakistan, the number of subsistence level farmers is increasing, and any farmer below 10 acres of land is not able to feasibly produce on that land. When you look at Israel, and the requirement for land to produce something feasibly, perhaps farmers are producing feasibly within 1 acre, 2 acre crops also. The soil fertility and lack of high yield variety of seeds is a major issue. The middlemen, artis, kawalas, all the middlemen who are operating in agriculture sector, they're using some really exploitative terms to carry out their business activity. And ultimately, what's happening is those people who are on ground doing the hard work, impact is not reaching to them. So how do we create inclusive, sustainable value chains and accelerate the agriculture sector and address these problems? Furthermore, we realize that there's no precision and rotation sort of technologies available or being used at a larger scale. जिसमें आपकी different fertilizer requirements को आप meet कर सकें, variable soil structures, variable water requirements, and remote monitoring को भी आप involve कर सकें. Traceability remains a big challenge in Pakistan agriculture sector context, because if we want to be able to export, we need to understand the export certifications and compliances of different countries. And unless our value chains are traceable and you're collecting data at every point, we may not be able to get those certifications, because without data, you cannot certify whether you're following those practices or not. So marketing, generally having an aggregated model where you can draw economies, a common platform through which you can market and connect. So these things were access to market remained a major challenge for the farmers. So all these things led me to sort of start building the Village Growth Acceleration Program. And very recently, under Ministry of Science Technology, the previous Minister of Science, Fawad Chaudhry Sahab, asked me to basically develop a blueprint for reviving the agriculture sector and utilization of technology. And we were all very cognizant that there are lots of interesting technologies available across all these different R&D and innovation hubs and universities across Pakistan. But for some reason, the end user of that technology is not able to benefit from that. And the connectivity issue between the different actors that need to come together, that remained a major challenge. So I designed a blueprint for the Prime Minister, and basically one leg of that blueprint, I am in the process of implementing it. We have completed the pilot study, phase of that project. It's the Billion Tree Honey Initiative. I'm the chief architect. I designed that project. We've now also been given funding under the PSDP, PC1 through PC1 process. We've got some funding to create an enabling environment. But the principles that we are using to accelerate the apiculture or the honey sector or the honey value chain revolve around market-driven forces, in which we're trying to draw in as much market capital and use market actors to be able to accelerate. But those activities which are non-commercial in nature
that any commercial actor is not going to pursue that. That is perhaps where the government needs to come in. If the commercial actors start doing those activities which are not commercial, it doesn't make sense. It's not going to happen. And if the government starts doing those activities which are commercial in nature, it creates distortion, market distortion, and crowds out the private sector. So we need to delineate very neatly what is the mandate of the government, what governments are supposed to do, and what is the mandate of the private sector and what they're supposed to do. So that's what we have done in the apiculture scaling up program for income and rural employment. The acronym is ASPIRE. We aspire to transform the agriculture sector in Pakistan. So we're starting with honey, and honey is a very interesting value chain. And I'll spend most of my time talking about this value chain, and then I'll also give a few more additional case studies for dairy and perhaps rice and cotton and a few other value chains, and what we can do and how we can use similar models in that process. So this is a high-level Gantt chart and timeline of activities, the basic targets that we are trying to achieve, and the activities that we are going to carry out to achieve those targets over timelines, and who are the responsible parties which are going to do it. So this is part of the blueprint that I had given to the Prime Minister. And under this, we defined several objectives, and then to achieve those objectives, what are the results that we are going to monitor to actually achieve those results? What are the indicators? And for each activity, there's an indicator, and then there's a means of verification for that indicator. So this is what we call the result-based chain. In development sector, when you're going out to do an intervention, we kind of identify what are the inputs that we are going to, what are the interventions, we call them inputs, that we're going to pursue, and what are the outputs we expect from those inputs, and then ultimately what are the outcomes that we are aiming for, and finally the impact. Impact is something that happens over a long period of time, but at each stage in this result-based chain, one needs to very clearly identify the interventions, activities under input, output, outcomes, and impact, and then define the indicators and the means for verification of those indicators, so we can monitor whether we are able to spend the public money and achieve the results that we're aiming for in that process. So we created this entire plan, and what exactly we wanted to do, I'll pause on the program itself and give you the lay of the land of the apiculture sector. Really, when I did my study and when I collected the data, what I realized that in apiculture sector, there's a huge potential for growth and opportunity. We literally have cash on the trees. Actually it's nectar on the trees, but how you convert that nectar into honey and honey into cash. Majority of that nectar on the trees across Pakistan, if you look at the fauna and flora, and really Pakistan में आज तक कभी किसी ने fauna and flora पाकिस्तान का जो है उसको मैप भी नहीं किया. तो ये जो हमने गवर्नमेंट से फंडिंग लिया उसमें पहले तो हम पूरे फॉना एंड फ्लोरा को जीआईएस के थ्रू, स्पार्को के थ्रू एंड बाकी पार्टनर्स के थ्रू उसको मैप कर रहे हैं, और जो बिलियन ट्री के अंदर जो प्लांटेशंस होने जा रही हैं पूरे मुल्क में, हर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हमने एक पूरी लिस्ट दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज कि कौन कौन सी प्लांटेशंस की तरफ उनको जाना चाहिए, दैट कैन परहैप्स प्रोवाइड सम ग्रीन जॉब्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल कम्युनिटीज. And as far as people going into forests and cutting the trees, if their livelihoods are dependent on those trees, perhaps they're not going to cut those trees. So that was the inspiration behind going after apiculture. And also apiculture is a cross-cutting value chain. It's a landless activity. It kind of helps through pollination, improve the agriculture yields. It improves the yields of almost every agriculture value chain. So that's why we decided it's the easy value chain where we don't have to get into the whole nitty-gritty of who owns the land, what are the leasing rights, whether we can sublease, sublet, or whatever else we can do with that land. Here we don't need land. And as you would hear from me, how we're kind of building this whole program, you'd realize that the opportunity, it was a low-hanging fruit. और इसकी इंस्पिरेशन जो थी वो प्रीडोमिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना इनिशिएटिव अनाउंस किया चिकन एंड एग का, I was one of the happiest person. I personally was in support of these kinds of activities. Rather than giving people a fish, one needs to train them how to fish. While the Social Security and the SAS program is giving cash transfers and at the basic level providing social security, we as an economy, as a society, we cannot live if we continue to throw grants on people. We need to equip them with skills, and we need to translate those skills into economic activity, and that will only happen through programs like these. So chicken and egg was a good initiative, but it was a poorly executed program, and I was
I was quite disappointed that it has not taken off, and that's when I started designing the honey sector apiculture program. And the inspiration was that the execution should be spot on. And this time around, we should show how we need to accelerate the how we need to accelerate the agriculture value chains and accelerate the agriculture sector, starting with apiculture value chain. So उसमें जो हमारी research थी, it showed that almost 80+% of our potential to harness honey, we are not able to do that because we don't have enough hives or colonies in Pakistan, and quite a lot of colonies were taken by the Afghan refugees across the run line. Their livelihoods depend on them. And when they left for Afghanistan, they took a lot of these colonies. So we were left with almost 60% of the total colonies that we used to have. So currently the count, and there's no one who's counted it, there's no real data, but the consensus in the sector is that we have about 4 lakh colonies in Pakistan, whereas the potential for colonies in Pakistan can be easily well over multiple crore, almost 5 to 6 crore if you look at only the Jhelum to Gilgit belt. But the rest of Pakistan, I've not looked at. I mean, I'm not counting that in this potential. So as more fauna and flora is through Billion Tree program is created, there'll be more opportunity for more colonies and hives. But currently we stand at about 4 lakh, where the potential is almost 5-6 lakh. So the room for growth is humongous. And there's not a single company in the country which has the capability to do quality queen rearing. भेड़ बकरियों की rearing तो करना आसान है, लोग कर लेते हैं, but quality queen rearing, producing colonies of strength, companies which can produce modern hives with IoT devices attached to it, so that we can also do remote monitoring of those hives. These things were not happening. So we created a company called the Hive Management Company, and we went and designed this program, and then gave this blueprint to the Ministry of Climate Change. The minister, SAPM Malik Amin Asum Saab, when he saw the blueprint, he quickly grasped it, and I salute to him. He knew the importance of this value chain, not just for the agriculture sector, but also for the climate change, and also for creating green jobs, and also for creating a blueprint for the rest of the agriculture sector, how we can create business models. While we realize there are lots of interesting technologies across different sectors, different universities in Pakistan, but वो technology हमारी end user तक नहीं पहुंच रही. तो इसमें हमने जो पूरा program build किया, वो 3 phases में हमने build किया, and इसकी पूरी एक theory of change है. जब आप एक कोई नई चीज लाते हैं, तो उसमें जो जितने भी stakeholders हैं, उस नए environment में किस तरह वो fit होंगे. So I give an example of an embryo. जब एक embryo आता है infant stage से ultimately maturity stage में जाता है, उसी तरीके से हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें जो इनिशियल फेज थी उसमें हमारा बुनियादी मकसद था कि हम एक मल्टी एक्टर नेटवर्क को इनेबल करें, जिसमें न्यू हाई पोटेंशियल B2B वैल्यू चेन्स डेवलप हों, फोकसिंग ऑन बेसिक इनेबलिंग सेक्टर रिक्वायरमेंट्स, reducing risk or providing opportunities, going for some quick wins for business, and then creating some sector associations, and finally providing support to general facilitation support, brokering support, and training and finance to our actors, which included your beekeepers, which included your processors, and which also included some intermediary industries. At the second stage, what we plan on achieving, पहले स्टेज में तो हमने जो करना था उसमें हमने ओवरऑल जो एक हाई लेवल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है सेक्टर एसोसिएशंस के थ्रू और बैंक्स के थ्रू, वो हमने उसको डेवलप किया. दूसरी स्टेज में हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू की. ट्रेनिंग्स के बाद मकसद ये है कि इस वक्त जितने भी हमारे बी कीपर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्मल सर्टिफिकेशंस नहीं है उनके पास, एंड वी आर नॉट एबल टू a certain quality value chain जो शुरू होती है वो आपकी प्रोडक्शन लेवल से शुरू होती है, और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सर्टिफाई ना किया जाए, एक स्टैंडर्ड पे ना लाया जाए, so we cannot control the quality of the output which comes at the standardization formulation lab or the processing end at a later stage. So in the first stage we engage with NAFTAC. NAFTAC के अंदर हमने पूरा एक करिकुलम जो है उसको लॉन्च किया है, लॉन्च हो चुका है, और उसको अब इंशाल्लाह अगले महीने से हम शुरू भी करने जा रहे हैं, जिसमें पहली स्टेज में जो एग्जिस्टिंग बी कीपर्स हैं उनको हम ला के थ्रू अंडर RPL रिकग्निशन थ्रू प्रायर लर्निंग रिकग्नाइज करेंगे. जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको एक इन डेप्थ ट्रेनिंग के थ्रू लेके जाने की जरूरत नहीं है, बट उसको असेस करने की जरूरत है क्या उसको सारी चीजें पता हैं, और जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएंगी उस असेसमेंट फेज के थ्रू. So once they're certified, we are giving them transferring assets.
under Kamyab Jawan through 5 lakh rupees of loan. We're giving about up to 20 modern hives, which cost about 25,000 per hive. These hives are, we also have the technology where we can integrate IoT devices, and through a mobile application, the beekeepers can also monitor the status of those hives. हनी प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी प्रोड्यूस हुई है, वो बेसलाइन वेट एंड एंडलाइन वेट के थ्रू, एक एल्गोरिथम के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके अंदर क्वालिटी ऑफ हनी, उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, और चीजें उसके इंडिकेटर्स, जो की इंडिकेटर्स हैं, उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं. तो ये हमने सारा जो है इस फेज के अंदर प्लान किया है कि सारा हम करेंगे, और ये फेज अब शुरू होने वाला है. बी कीपर्स जो कि हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, सर्टिफाई होते हैं, जिनको फाइनेंसिंग मिलती है, और फिर उनको हम हाइव्स ट्रांसफर करते हैं. विद अबाउट 20 hives, they can be earning about 40 to 50,000 rupees a month income. हमारी एक modern hive जो है roughly in the market can produce up to 40, even more, but let's assume it produces about 20 kg annually. And if you go out and sell 1 kg of honey in the market for about 2,000, so you know retail price is much higher. So अगर आप किसी retail shop में जाते हैं, 2-2,500 का आपको आधे kg का 1,800, 2,000, 2,500, even 3,000-3,500 तक आपको आधा kg का जार मिलता है, depending upon which brand, which quality of honey you're buying and which type of honey you're buying. The spring honey generally is cheaper, acacia and all, but berry honey tends to be the most expensive one. But अगर आप assume करते हैं कि आप on average जो भी honey produce कर रहे हैं across different seasons, different types, let's assume an average price 2,000 per kg, and we produce about 20 kg annually from one modern hive. So that on the basis of that assumption, if you invest 25,000 in one hive, you would be generating about 40,000 rupees of income in 1 year, which is a substantial amount of income, जिसमें से कुछ income जो invest कर रहा होगा hives में, और जो infrastructure उसके अंदर, उसको आपने return देना है. आपने बी कीपर्स को पैसे देने हैं, जो लोग इस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, हाइव्स को मैनेज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, उनका एक शेयर है. इस तरह जितने भी स्टेक होल्डर्स, तो पूरा एक हमने बिजनेस मॉडल बनाया जिसमें सारों का इक्विटेबल शेयर हमने रखा है. एक कॉमन कंपनी हमने अभी फिलहाल बनाई है जो कि बायबैक एग्रीमेंट्स देती है इन सारे बी कीपर्स को. तो जो भी हनी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, लिटरली बी कीपर्स हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, गेट सर्टिफाइड, गेट फंडिंग, फाइनेंसिंग, एंड acquire the 20 modern hives. And after 1 year, if they pay back that loan, they can double up those hives to 40 and increase their income and continue increasing their income as long as they continue to progress. The banks essentially will come in if they see that who's the entity which is borrowing, or the beekeeper that's borrowing, they have got buyback agreements from credible organizations. So they have the comfort that if they lend to them to produce honey, there's a buyer for that honey already in place, and they'll be able to recover their loan. So these offtake agreements from processing companies are what we use as non-traditional collaterals. Otherwise, आपको पता है बैंक जो हैं lend नहीं करते अगर आपका collateral ना हो. तो this is the value chain financing framework that I created for Habib Bank about 8-9 years back, and they've been able to build a substantial portfolio across different value chains. So it's a tried and tested model for different banks. I developed it, and they've been doing business around this, and now it's a recognized model for scaling up. So ये हमारा, और जो हमारी जो common company है उसके अंदर हम इन beekeepers को to remain loyal to us, to continue to provide us the honey at wholesale plus a slight margin price. We also give vest their equity over a period of time. So when you build these kinds of models, why would that beekeeper want to go and do business with anyone else, right? If he's getting the wholesale plus a slight premium from us, and then over a period of time you also vest equity in the processing company, we'll be able to aggregate a lot of honey across the space from multiple beekeepers. And finally, in the last leg, we feel that once the आपका जो पूरा सेक्टर है mature हो जाता है, आपके पास एक scale आ जाता है, so we want to establish standardization formulation lab and build the infrastructure across Pakistan for the standardization formulation lab, because this is the critical part. Pakistan में जितनी भी honey produce हो रही है इस वक्त हमें पता नहीं है उसकी quality क्या है. No one is able to certify. PCSR certification perhaps is not that credible enough. So we need to establish a model, and जो एपीकल्चर के लिए रिक्वायरमेंट है आपको स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मुलेशन लैब की, वो किसी लैब में नहीं है पाकिस्तान में. तो हमारे गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू हमने ये 2 लेग जो हैं, जो सर्टिफाइड बी कीपर्स और जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मुलेशन लैब बनानी है, और फिर जो बैंक्स के लिए आपने एपीकल्चर फाइनेंसिंग, वैल्यू चेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उसमें जो उनको आपने लेके चलना है, बिकॉज हमारे बैंक्स ही दे यूज्ड टू डूइंग व्हाट वी कॉल लेजी बैंकिंग, दे डोंट लाइक वेंचरिंग इनटू न्यू मार्केट्स. सो उनके साथ भी आपको काफी हद तक
आगे बढ़ना पड़ेगा। और बैक एंड पे गवर्नमेंट से कुछ उस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग मिल जाए जिसके थ्रू हम क्रेडिट गारंटीज दे सकें बैंक्स को जो कि लेंड कर रहे हैं सेक्टर में। अगर नॉन परफॉर्मेंस हो तो दे आर एबल टू रिकवर द लॉस थ्रू दिस नॉन थ्रू दिस क्रेडिट गारंटीज। सो ये हमारा पूरा एस्पायर का प्रोग्राम है। दिस इनेबलिंग एनवायरनमेंट विल देन incentivize lots of beekeepers to come and get into production. Private sector has to come and do this work, whether it's at the production leg, whether it's at the processing leg. Processing पे हमने एक processing बना दी है जो कि बायबैक्स के साथ काम कर रही है। इसके बाद मल्टीपल और प्रोसेसिंग कंपनीज भी आ सकती हैं, बड़ी एग्जिस्टिंग कंपनीज, नेशनल फूड्स एंड लाइक ऑफ दोस कंपनीज कैन आल्सो एंटर द स्पेस। एंड इंटरमीडिएट वैल्यू चेन्स के अंदर जिसमें आपके कारपेंटर्स जो कि मॉडर्न हाइव्स बनाएंगे, फिर आपके आईसीटी, बहुत सी इसमें रिमोट मॉनिटरिंग की एप्लीकेशंस हैं जो कि इसमें चाहिए हमें। लॉजिस्टिक्स में हमने एक पूरा इनोवेट किया है, लॉजिस्टिक्स में हमने पूरा इसमें इनोवेट किया है एक पूरा कंटेनर जिसमें आपकी हाइव्स जो हैं यू don't need to take hives, so containers can be taken by trolleys and cars into various location because apiculture is migratory apiculture. Season to season you move the location of these and you need transportation plays a major role. उसमें हमने लॉजिस्टिक्स के लिए भी वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको भी थोड़ा डेवलप किया है। उसमें स्टैंडर्डाइज हमने कंटेनर्स बना दिए हैं जिसमें आपकी हाइव जो है अपनी अपनी जगह पे होती हैं एंड वहीं से आप स्लाइड कर लेते हैं जहाँ पे आप रखना चाहते हैं कंटेनर। और कंटेनर्स जो हैं दे हैव ट्रैकिंग डिवाइसेस IoT, so you can track location and you know if someone is so you get the comfort that you know the location, and also if something goes wrong then you get a pre-warning so you can go and take remedial steps very quickly. और उसमें आपकी फिर जो मैनुअल विजिट्स हैं टू द साइट्स वो आपके काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। और उसमें जो नुकसान हो सकता है आपको उससे आपको पहले अगर इंटीमेशन मिल जाती है तो वो चीजें बहुत। तो 3 फेजेस के ऊपर हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। शुरू में आप स्टार्टर पैकेज दे रहे हैं, स्टार्टर पैकेज से आप अल्टीमेटली ग्रेजुएट कर रहे हैं बी कीपर्स को टू क्रिएट एपायरीज। एक फीजिबल एपायरी जो है ट्रेडिशनल, अगर आपके पास हाइव है you need at least about 170 hives for you to be able to run a feasible apiary, a self-sustainable business model. But ये जो modern hives हैं इसमें चूंकि इसकी आउटपुट almost 60% ज़्यादा है from traditional hives, और इसको भी हमने इनोवेट किया है in the context of the local climate जो हमारा है। उसमें आपकी जब ट्रांसपोर्ट करते हैं बीज को तो वो मर जाती हैं, तो उसको उसके लिए आपको हमने स्पेशल इसका डिज़ाइन जो है यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट मुताबिक उसको डेवलप किया है। और इसको हमने भी पायलट किया है 5 लोकेशंस में, जिसमें 3 लोकेशन जो थी, एक प्रेसिडेंट हाउस था जहाँ पे हमने अपने मॉडर्न हाइव्स रखी, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस था, और फिर प्राइम मिनिस्टर का अपना बनीगाला घर वहाँ पे भी ये हमने हाइव्स रखी। और फिर कुछ और 3 साइट्स थी, मरगला, काला चिट्टा, अटक, ऑल दीज यहाँ पे हमने जो मॉडर्न हाइव्स रखी। तो उसके जो रिजल्ट्स मिले उसके रिजल्ट की बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी इसकी प्रोडक्शन जो थी ऑलमोस्ट 60 टाइम्स हायर थी देन योर ट्रेडिशनल हाइव्स। सो अब ये जो हमने अभी जो पूरा बिजनेस मॉडल आप लोगों को बताया है हनी का, जिसमें एक कंपनी बायबैक एग्रीमेंट्स के थ्रू काम कर रही है, गवर्नमेंट आके अपना एक रोल प्ले कर रही है, जिसमें बी एपिकल्चर बोर्ड हम बना रहे हैं, फिर आपकी फ्रेगमेंटेड एसोसिएशंस है एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं, उनको हम एक एसोसिएशन लेवल पे लेके आ रहे हैं जिसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे बी कीपर्स एंड प्रोसेसर्स। एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू उनको सेलेक्ट किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा और विद बायबैक एग्रीमेंट्स उनसे हनी खरीदी जाएगी, उसको एग्रीगेट किया जाएगा एट अ कंपनी लेवल। तो हम समझते हैं कि ये जितना हमने अपनी हाइव्स प्रोड्यूस करनी है, अभी तो हमारे पास 4 लाख हाइव्स हैं। Under this Aspire program, we wish to double up the number of hives we have. But even अगर हम 4 लाख से 8 लाख पे जाते हैं, potential अगर 5 करोड़ का है, it's a long journey ahead. और ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जी पाकिस्तान के अंदर एक जमाने में almost 40,000 metric ton की हनी प्रोड्यूस होती थी। Over those years, last 20-30 years, हमारी honey production has come down to almost about 10,000 metric ton. And इसकी बहुत सी वजूहात हैं हमारी, we've lost a lot of hives also, but at the same time we have we've also timber mafia की जो systematic deforestation हुई है उसका एक major उसकी वजह से एक major impact आया हमारी honey production के ऊपर। And you know this situation is very precarious from a climate change point of view, and Pakistan is one of the highest impacted countries as far as climate change is concerned. तो पूरी दुनिया में इस वक्त बी रेवोल्यूशन है और you know उसका क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट है, अगर आप यूएस की मार्केट देखें इसमें पोलिनेशन की वजह से यूएस मार्केट में अगर आप देखें कितना इजाफा होता है इनकी इकोनॉमी में, तो ऑलमोस्ट कोई 15 बिलियन यूएस डॉलर का पोलिनेशन की वजह से। मैं भी जो डायरेक्ट इकोनॉमी में इम्पैक्ट है हनी का और हनी के प्रोडक्ट्स का, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का,
और एपीकल्चर में हनी इज जस्ट वन प्रोडक्ट, उसके 9 और बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसमें रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, पोलन है, बीज वैक्स है, वेनम की बहुत सी फार्मास्यूटिकल Omar, एप्लीकेशन है, रॉयल जेली। sorry to interrupt you, Omar. Just in the interest of time, we are in 4 minutes. So if we can wind it up in 6 minutes and then also have some question and answer session. I think some folks have questions, so they would like to know about that. And I think if you could cover a little bit about dairy as well. बिल्कुल ठीक है। So because I know you have a hard stop, that's why I'm trying to fast track you a little bit. जी, so there is lots of interesting information on the apiculture sector, but मैं भी जो आपको economics, unit economics बता रहा था, it's phenomenal unit economics only on the basis of honey. जब बाकी आप बाय प्रोडक्ट्स देखते हैं तो economics goes beyond, but ये चीजें जो हैं तभी आप कर सकते हैं जब तक आपका segregated models हो। अब हमने इसी किस्म का मॉडल एक इम्प्लीमेंट किया था फॉर एनआरएसपी, उनको हमने एडवाइस किया था, उन्होंने कॉटन के अंदर काम किया था, सॉरी उन्होंने राइस के अंदर काम किया था, और राइस के अंदर उन्होंने हाफिजाबाद में जो एक मॉडल डेवलप किया, फैंटास्टिक मॉडल, exactly on the basis of that they create one company, agri processing company. रिसर्च छोड़ के वहाँ पे आपकी राइस की पैडी जो है उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है एंड राइस फार्मर इज डेसिमेटेड। तो उन्होंने वहाँ वे हाउसिंग बनाई, वे हाउसिंग में पैडी रखते थे, पैडी अगेंस्ट वे हाउसिंग रिसीट देते थे, वो उससे फाइनेंसिंग ले लेते थे बैंक से, और उस फाइनेंसिंग से अपनी अगली साइकिल ऑफ क्रॉप के इनपुट्स को फाइनेंस कर लेते थे, सो दे डिडंट हैव टू सेल द पैडी इन डेस्परेशन, और जब अच्छी प्राइस मिलती थी तो वो बेचते थे, और इससे उन्होंने डबल ट्रिपल कर ली इनकम। अगले साल सारे फार्मर्स ने आके बिजनेस करनी शुरू कर दी, और उन्हीं फार्मर्स के बच्चों को उस प्रोसेसिंग कंपनी में जॉब मिलनी शुरू हो गई। फार्मर्स को 5-6 साल में उन्होंने इन्वेस्ट किया इक्विटी में, और फिर वो अल्टीमेटली कारफोर के थ्रू, अब मिडल ईस्ट के अंदर दुबई के अंदर आप अगर जाएंगे तो हाफिजाबाद की प्रीमियम क्वालिटी राइस जो है कारफोर की प्रीमियम शेल्फ पे इस वक्त बिक रही है, तो उससे हाफिजाबाद की कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म हो गई। डेयरी के अंदर अगर आप आते हैं, इस वक्त हमारे बहुत से लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं, पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट 3rd और 4th लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर, बट अगर आप देखिए कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है और ऑर्गेनाइज नहीं है, और हमारे बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द पुराने तरीकों से गवाले जो हैं वो अपनी बाइसिकल्स पे और वो साइकिल पे वो अपने में दूध बांट रहे हैं। तो जो हमने एक पूरा मॉडल डेवलप किया विद निपजी, व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो मैं ये भी आपको थोड़ा शेयर कर लूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिए। ये वैसे उम्र आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप आज सिर्फ हनी को ही टारगेट करना चाहते हैं और फिर डेयरी के हम अलग एक सेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है यू हैव अ डेयरी का लॉट अलग मोर। सेशन कर लेंगे, हाँ बट एक क्विक मैं इसको रैप अप कर दूं, डेयरी पे पूरा एक सेशन करना जरूरी है, बिकॉज डेयरी इज अ फैंटास्टिक सेक्टर। और डेयरी में हमने देखिए इस वक्त देखा कि डेयरी में हमारी जो प्रोडक्शन है, वी आर अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ डेयरी, बट जो हमारी एवरेज यील्ड है हमारे काऊ की बहुत कम है कंपेयर टू अदर एनिमल्स, सो उसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी की एक रिक्वायरमेंट है। और फिर इंसेमिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंसेमिनेशन के थ्रू पूरी एक साइंस है। तो one of the leading centers, Wageningen University is considered the Harvard of agriculture sector. It's a Dutch university. उनको मैं लेके आया, उनके साथ हमने पूरा एक मॉडल बनाया डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी पार्क का पाकिस्तान में। और उसमें आइडिया यही है कि आप छोटे छोटे जो लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं, 20 मवेशी हैं, 30 हैं, 40 हैं, 10 हैं, उनके लिए आप एक कॉल फॉर एप्लीकेशन के थ्रू सारों को इनवाइट करें, एक स्टेट ऑफ आर्ट शेड बनाए जहाँ पे उनको जगह दें सारे एनिमल्स को, उनको वैक्सीन, उनको फॉरेज, जो भी उनको और चीजें मिलनी है, मेडिकेशन मिलनी है, वो सारी उनको वहां पे मिले, और क्रॉस ब्रीडिंग इंसेमिनेशन से उनकी जो नस्लें आगे इंप्रूव करनी है, यील्ड इंप्रूव करनी है, वो करें। और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मिल्क, उसको एग्रीगेट करें थ्रू अ फॉर्मल प्रोसेस, और उसको एक कॉमन ब्रांड के थ्रू मिल्क को, और मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स में चीज और बहुत सी और चीजें आ जाती हैं, उनको लेके आए। उसी तरीके से उस कंपनी में आप इन सारे लाइफ स्टॉक ओनर्स को आप इक्विटी वेस्ट कर दें, और उनको एक मिनिमम इनकम गारंटी करें जो कि उन एनिमल से वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। तो you will be through these kinds. So the gist of the story, and I'm going to now quickly wrap up, the gist of the story is, you see, there's a lot of technology. अभी निपजी के पास एक और कॉटन का सीड है जिसने हमारे वो पिंक फ्लाई एंड वाइट पेस्ट की डिजीजेस को भी टैकल किया, इट्स रेजिस्टेंट टू ऑल दीस डिजीजेस, एंड इसकी यील्ड इज 4 टाइम्स। और अभी हमारे कोविड के अंदर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाउंड हुई है, उसकी वजह से उनको सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स हो गए, बट हमारा फार्मर उस तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही। तो वी नीड टू इनोवेट नाउ बिजनेस मॉडल्स, जिस तरह का बिजनेस मॉडल हमने बी में एपीकल्चर में डाला है, राइस में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ है, डेयरी के लिए जो हमने बनाया है, इसी किस्म के बिजनेस मॉडल्स हम डिफरेंट वैल्यू चेन में बना के वी कैन रोल आउट प्रोग्राम्स, do a call for application, invite application, see who wants to participate in this program. And when you create a proposition, which livestock owner would not want to participate if he gets to get that basic income that he's getting
from his and then there's a potential for him to continue growing that income that he's not able to do it on his own. तो ये हमारा पूरा एक विजन था जी विलेज ग्रोथ एक्सेलरेशन प्रोग्राम में, जिसकी कुछ हमने आपको glimpses दी हैं, और perhaps we can go into deep dive into selective value chains in more detail. नहीं, thank you so much, Omer. आपका you are a wealth of knowledge as always, and once you get started, there's a lot of things that you can share, and I'm sure people will also get to realize when they interact the same with you. But I do want to start off with a couple of questions here. The first one, Khalid, if you want to go ahead with your question for Omer. Khalid Shamsher. Okay, maybe he's on mute, so maybe we can move over to Shazad Yunus, who has a question, and then we can come back to Khalid. Ji, Shazad Yunus. Ji, thank you very much. Thank you, Omer, for such a wonderful deep insight into the problems. I belong to a university, so I'm working at NAST. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि हाउ डू यू थिंक यूनिवर्सिटीज जो है वो इसके अंदर वो इफेक्टिवली क्या रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट के आपने आईओटी की बात की, आपने आईसीटी की बात की. अब ये कुछ चीजें तो लैब्स के अंदर तो समवेयर पीपल आर डूइंग इन द यूनिवर्सिटीज, बट तो उनको किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट रोल एग्जैक्टली यू सी इन रिसर्च और टेक्नोलॉजी की यहाँ पे अडाप्टेशन के ऊपर? जी देखिए जी, इस वक्त मेरा जो प्राइमरी बुनियादी मैंडेट है एचएससी में वो यही है कि और मैंने अभी रिसेंटली एक पूरी मैपिंग स्टडी भी की है सारी ऑरिक्स एंड बिग्स की, जिसमें 120 यूनिवर्सिटीज को फिजिकली जाके मिला हूँ, और आपको डिटेल क्वेश्चनर्स भी मैंने दिए हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर बोथ ऑरिक्स एंड बिग्स, और काफ़ी डेटा कलेक्ट किया, और उसमें मैंने बहुत रिकमेंडेशंस दी हैं, और फिर उस रिपोर्ट को मैंने डिसेमिनेट किया अक्रॉस ऑल ऑरिक्स. बट उसका बुनियादी मेरा जो मैंडेट है एचएससी में इसके हमारी बहुत सी रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटी में, बट वो लैब में पड़ी हुई है. जो रिसर्चर है वो रिसर्च करना जानता है, बट उस रिसर्च को फिर आगे किस तरह लेके जाना है, इंडस्ट्री से लिंकेजेस कैसे बिल्ड करने हैं, कमर्शियली सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स कैसे बनाने हैं, वहाँ पे वो इतनी मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं अचीव कर पाया. तो इसके जो सोल्यूशन है, आंसर विल गो रियली लॉन्ग, बट ये मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है पूरी दुनिया में. क्वाड हेलिक्स कहा जाता है इसको, जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट हैज टू कम टुगेदर. जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है एपीकल्चर सेक्टर में, किस तरह हम एज प्राइवेट सेक्टर गए, जिसमें हम पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने पूरा गवर्नमेंट के लिए पूरा एक प्रोग्राम डेवलप किया टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली सर्टेन थिंग्स दैट वर नीडेड बाय द कम्युनिटी. हमारी कम्युनिटी में हनी, कौन सा वो नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों के लिए एक हनी का जार अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखे? हर घर चाहेगा. मेजॉरिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स कांट अफोर्ड इट बिकॉज द प्राइस, हनी इज अ रॉयल प्रोडक्ट, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते. और हमारी जो सप्लाई ऑफ हनी है इंपोर्ट हो रही है, हम प्रोड्यूस भी इतनी ज्यादा नहीं कर रहे, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी प्राइस भी ज्यादा है. तो और ऊपर से एनवायरमेंट का इम्पैक्ट. सो हमने कम्युनिटी की नीड्स को सामने रखते हुए ये पूरा प्रोग्राम डेवलप किया कि मार्केट में एक डिमांड थी, डिमांड ड्रिवन रिसर्च, डिमांड ड्रिवन इनोवेशन अगर की जाए तो फिर उसकी अडॉप्शन और एक्सेलरेशन भी आसान हो जाती है. तो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में एक और चीज हो रही है, हाईटेक मायोपिया, जिसको मैं कहता हूँ कि हमारा रिसर्चर और जो टेक्नोलॉजिस्ट है और जो फैकल्टी है वो रिसर्च करे जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड इंडस्ट्री. हमारी एक भी यूनिवर्सिटी ने कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं रखा जिसमें वो फॉर्मली अपनी इंडस्ट्री से रेगुलरली पीरियोडिकली डेटा कलेक्ट करे कि उनकी R&D की नीड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी की नीड्स क्या हैं. और जब एचईसी जैसे इदारे अपने हम फंड्स लॉन्च करते हैं, कॉल फॉर एप्लीकेशन करते हैं, तो वो दुनिया के देखते हैं कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं, किसी टॉपिक को पकड़ के रिसर्च कर देते हैं, बट वो कोई फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अपनी इंडस्ट्री सोसाइटी की नीड्स नहीं कलेक्ट कर रहे, उनके पास डेटा नहीं है. तो हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं एचईसी में इस वक्त, जिसमें हम आपकी रिसर्च को भी डिमांड ड्रिवन करें और स्पॉट हीलिक्स फ्रेमवर्क में आपको हम इंकरेज करें, रिसर्च करें, ताकि जब आपकी रिसर्च तैयार हो जाए तो उसको अगली स्टेज में जिस ग्रुप ने आपकी उस रिसर्च को कन्वर्ट करना है इनटू प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोटोटाइप, वो उस पे काम करे, और फिर फाइनल स्टेज के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी, जो मेच्योर टेक्नोलॉजीज है, उनको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाना है और स्पिन ऑफ कंपनीज क्रिएट करनी है. तो देखिए, जो बंदा रिसर्च करता है, जो बंदा प्रोडक्ट बनाता है, जो बंदा एक बिजनेस बनाता है उस प्रोडक्ट में, these are different mindsets, these are different skill sets, but all these people have to come together and one needs to create a model in which we can glue all these different segments so that they can come and work together and contribute to what they need to contribute and ultimately deliver impact. तो ये हमारा एचएससी में इस वक्त मकसद है, और एचएससी के जो मल्टीपल फंड्स भी हमने इस वक्त बनाए हैं, आपकी इस इंटायर वैल्यू चेन में डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट
ग्रुप्स को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ कमर्शलाइजेबल रिसर्च इंप्रूव हो, जो आपकी मेच्योर टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, और फिर जब स्पिन ऑफ कंपनीज बनती हैं तो हम उनको फिर प्रॉपर इंक्यूबेशन प्रोसेस के थ्रू इंक्यूबेट करें। और इस सारी चीजों को हम अगर लिंक कर दें नीड्स के साथ, अपनी इंडस्ट्री सोसाइटी की नीड्स के साथ, तो फिर इसका हमारा एंड में जो कनेक्शन का काम है वो आसान हो जाता है। अगर नीड्स के बगैर हम इस चीज को एंड तक लेके आएंगे, we may realize कि इंडस्ट्री सोसाइटी विल से हमें तो चाहिए ही नहीं ये चीज, हमें चाहिए। उमर मेरे ख्याल है दो एक सवाल और हैं, तो विल जस्ट क्विकली टेक देम एज वेल। पहले मैं ये खालिद शमशेर साहब का एक सवाल था, आया हुआ है, एज एन एग टेक एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल फार्मर आई एम इन नीड ऑफ एक्शनेबल इनसाइट्स एंड सस्टेनेबल translates to profitable recommendations for fast track implementation. That's the first question that he had, and I think you can make a segue into the next question as well, which was, for commercial honey farming, do we need at least 170 beehives? Is the time required for making the venture profitable about 4 to 5 years? So depends on your business plan. Profitable अगर आपने चीज करनी है तो you can within 4 to 5 years. You don't have to wait for 4 to 5 years to make your honey production profitable. बट देखिए उसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत से वेरिएबल्स हैं, और अगर आप यूज्ड टू नहीं है इस सेक्टर में तो आप मार खाएंगे। फॉर एग्जांपल वेदर प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप वेदर को सही तरह ना समझें कि और अपना जहाँ पे आपने हनी हार्वेस्ट करना है आपको नहीं पता कि वहाँ पे वेदर पैटर्न्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। इस साल बहुत से हमारे एपिकल्चर बी कीपर्स ने मार खाई है क्योंकि ऑफ सीजन रेन्स एंड बाकी वेदर चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की वजह से वहाँ पे जो यील्ड थी बहुत आपकी चेंज हुई है। तो बट ये कि आपको 170 is the recognized sort of sort of consensus amongst all the people who are working in Pakistan कि उसमें जो आपको इकोनॉमिक्स मिलती है, जो आपको स्केल चाहिए, और जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फीडिंग में, बी कीपर्स में, तो जब तक आप वो इकोनॉमी अचीव नहीं करते, स्केल अचीव नहीं करते, तो आपको पर यूनिट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी काफी कम रहती है। तो एनीवे तो ये आपका 170 इज परहैप्स गुड नंबर टू अचीव एम फॉर। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप हमारे इस बिलियन टी हनी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो उसमें इट्स मच सिंपलर फॉर यू। आपको फाइनेंसिंग की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन लेनी है फाइनेंसिंग, और आपको टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर कर रहे हैं विद बायबैक अरेंजमेंट्स, and people can start earning income. But naturally that's not for entrepreneurs, that's for the low level sort of जो low level पे beekeepers हैं उनको enable करने के लिए ये हमने इस लेग पे कम शुरू की है। You can come in as a processor if you're already in the beekeeping business, because उसका एक eligibility criteria है जो beekeepers आएंगे शुरू की stage में, you may not qualify to receive that kind of funding if you're already in business and you're doing well. So I think, Omar, we have lost connectivity with you. Omar? I think we lost connectivity with Omar. I'll just pause the recording. Yeah, Omar, welcome back. So we just have, I think we just have time for one last question because you're almost at your cutoff. लियाकत अली साहब का सवाल है कि बिल्कुल 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 उमर गनी साहब, ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं उनको सम अप करता हूँ कि ये जो मार्गला की आप बात कर रहे थे ना कि वहाँ आपने कोई चीज रखी हुई है इस तरह के हाइज वगैरह और मॉडल बनाया हुआ है, जस्ट उसका एड्रेस प्लीज मुझे किसी तरह मिल जाए, हम उसे देख लें तो देखने से ढेर सारे हमारे क्वेश्चन जो है ना उन्हें आंसर मिल जाएगा। और बैकग्राउंड इसका ये है कि इस साल हमने कोई 10 फार्मर्स के साथ ये काम किया है और उनमें से 7 फार्मर जो हैं वो तो प्रॉफिट में रहे हैं, छोटे लेवल पे था, 2 या 3 हाइव्स थे उनके, और 3 की मक्खियां ही उड़ गई हैं ना, तो वो गर्म एरिया है और इस तरह की चीज, तो वो हम मॉडल देखेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन जो है ना वो वहाँ आंसर हो जाए। और बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाई सारी चीजें, तो बस मुझे तो जगह का नाम बता दें, मैं पहुंच जाऊंगा, बाकी सवाल उधर ही। तो जगह तो देखिए इसमें आप तो खुद इस बिजनेस से वाकिफ हैं, ये माइग्रेटरी एपिकल्चर है और सीजन टू सीजन जगह चेंज होती है, और हमारा पायलट जो है कंक्लूड हो चुका है। अब हम नेशनल प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें एक जगह पे नहीं होगा, ये नेशन वाइड हम काम करेंगे। तो इस वक्त हमने अपनी मॉडर्न हाइव्स कहाँ रखी हैं वो हम आपको बिल्कुल, आप मुझे ऑफलाइन यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई कैन टेक यू टू आवर लैब ऑल्सो, जहाँ
मेरा ख्याल है कनेक्टिविटी इश्यूज एक दफा फिर आ गए हैं. The internet in Lahore. मैं थोड़ा सा कंसर्न इस बात से भी हूँ कि आपकी जो अगली कॉल है जिस पे आपने जाना है उसके ऊपर भी अगर मसले हुए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन एनीवे, in the interest of time and in the interest of everything, I think Umar, you covered everything very nicely and we really appreciate that. I know in 10 minutes you have to get on another call, but you know, it almost feels that there is a lot more to discuss and the discussion should continue. And like we were only able to barely touch the dairy part in this session, but maybe in 2 weeks time we can set up another one to go in more detail with that. Thank you once again for doing all of this, and I think there's some great work happening right now. It's just a matter of spreading the word, the good word out there to make a bigger impact. So thank you so much, Umar. And thank Inshallah. you for Thank all you the so much, participants who could join today. Thank you. Assalamu alaikum. शुक्रिया Allah. साहब साहब आपका भी और उमर साहब का भी बहुत शुक्रिया जी, बहुत Shukriya. शुक्रिया. Assalamu alaikum. खुदा